हेलो गाइस, और आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पार्ट टू कराऊंगी। इंग्लिश पार्ट टू नाउन्स पार्ट टू। और ये ना कि प्रेजेंटेशन, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है पर ये डॉक्यूमेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस पता चल जाएं जो अभी तक बनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन्स पार्ट टू। पहले तो हम रिवाइज करेंगे हमने पिछली वीडियो में क्या क्या किया है। What are nouns? Definition. A noun is a word that names a person, place, thing or idea. Concrete nouns name people, places or things that you can touch, see, hear, smell or taste. These nouns are intangible, which means you cannot touch, see, hear, smell or taste them using your five senses. Types of nouns. So हमने पिछले वीडियो में हमने रिवाइज किए थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और आज हम कुछ दो नए नाउन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन नाउन्स नेम नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और थिंग। Let us look at some examples of common nouns. Person, girl, name, woman, man, woman, mother, sister, teacher. And places में हमारा आता है house, school, hospital, store, building, playground. और thing में आते हैं हमारे pencil, chair, shoes, bone, hair, window वगैरह वगैरह। तो चलिए अब कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा रिमेम्बर रखने चाहिए। Remember the rule. Notice that none of these nouns start with capital letter. इनमें से कोई भी noun capital letter में start नहीं होते हैं। The only time that you capitalize a common noun is being of a sentence or in a title. जब वो sentence की starting में हो या फिर कोई एक title हो तो ही हम उसको capital लिखेंगे। जैसे ये sentences हो गए, the little girl liked reading comic books. We live in the yellow house. May I use your pencil? तो चलिए अब हम proper nouns को रिवाइज करते हैं। So proper nouns are the specific name of a person, place or thing. Let us look at some examples of a proper noun. Person, Mary, Joe, Mr. King, and place में आ गया आपका Harvard Military School, Florida, SE, Andrew Hospital वगैरह वगैरह। और थिंग में eel, ear, grey, Nike, Ford वगैरह वगैरह चीजें के नाम। जो नाम होंगे वो प्रॉपर नाउन, और जिनके नाम होंगे जैसे हाउसेस हो गए, हाउस के नाम होते हैं, स्कूल के नाम होते हैं। सिर्फ स्कूल बोलोगे तो वो कॉमन नाउन हो गया, स्कूल का नाम बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इजी। अब रिमेम्बर करना है इसका रूल। अब उसमें क्या था, हमें वो जब भी वो लिखते थे उसको हमें कैपिटलाइज नहीं करना था। जब भी उसको सेंटेंस के बीच में लिखे, स्टार्टिंग में लिखे या फिर टाइटल में लिखे तो ठीक था। अब इधर देखें, नोटिस दैट ऑल ऑफ दीज नाउन्स बीइंग विद कैपिटल लेटर बिकॉज प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स, दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। जैसे हियर आर सम sentences using proper nouns. Mary was the fastest runner. Harvard Military School is a new school in our town. I like to wash my hair with cold shampoo. Note, इधर note भी है, every proper noun
has a common noun, but not every common noun has a proper noun equivalent. For example, proper noun India और common noun हो गया country, और common noun dust है तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप common noun है तो उसका नाम ना हो, proper noun नहीं. There is no specific kind of dust, so it's just a common noun. जैसे dust हो गया वो एक common noun नहीं है, वो कोई proper noun, इसका कोई specific नाम नहीं है. तो चलिए अब हम न्यू करते हैं. तो ये न्यू आज हम करने जा रहे हैं. ये पहला है concrete nouns. Concrete nouns are nouns that can be experienced through our five senses, i.e. sight, hearing, smell, touch or taste, as we have written in the definition of nouns in the top. Most nouns are concrete nouns. The opposite of concrete nouns is abstract nouns. Let us look at some examples examples of concrete nouns. So, ऐसे हो गया, हम इनको देख सकते हैं, persons को, गर्ल, बॉय, नर्स, प्लेस को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो स्कूल, चर्च, रेस्टोरेंट, थिंग. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वैसे खुशबू आने लग जाती है तो आपको पता चल जाएगा. बोर्ड्स भी होते हैं जिससे आप देख सकते हो उसको. तो थिंग, कंप्यूटर, डोर, लैम्प आर द concrete nouns. Here are some sentences using concrete nouns. Nurse wrapped the cut on my finger. The church was very large. The door opened slowly. अब abstract noun क्या होते हैं? Abstract nouns are the nouns that are all feelings or characteristic and not any of your senses. वो किसी भी सेंसेस को सपोर्ट नहीं करती. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे let us look at some examples of feeling that are abstract nouns like love, fear, embarrassment, pride, surprise, trust. इन सबको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. तो here are some sentences using abstract nouns. The cat had fear in his eyes as he ran from the dog. Love was mentioned in the song many times. Trust grows in a good friendship. Next class of nouns are one that can be counted or not before we talk about them. We need to make sure that you understand singular and proper terms. Singular nouns are nouns that mean only one of something. Okay. A chair, dog, hat, box, etc. Plural nouns are nouns that mean more than one something, etc. Chairs, dogs, hats, boxes, etc. Adding s and es changes the meaning from one or to more than one. Some more types of nouns. So, और भी types के nouns जैसे count and non-count nouns. The count nouns are easy to spot because they are nouns that can be counted. जो count कर सकते हैं वो easy होता है. और non-count का भी बताती हूँ. They are a part of a unit or group of more than one. Okay. Let us look at some examples of count nouns. So इधर person हो गया, girls हो गए, boys हो गया, nurses हो गई, girls, boys, nurses, place, schools, church, restaurants, और thing में आगे books, chairs, lamps. और non-count में क्या होता है? Mass nouns or
आर नॉन काउंट और मैस नाउंस भी कहते हैं, ये भी नोट करिएगा, ओके। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप स्टडी के पॉइंट जैसे वगैरह चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नोट करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे नोट कर सकते हैं। Non-count nouns or mass nouns are nouns that cannot be counted. They are a group, a liquid gas, a concept, an activity, an idea, or a collection. Let us look at some examples of non-count nouns: weather, water, poetry, smoking, milk, money. Remember the rule: if you can use the word an in front of a noun is a sentence or a number word front of it, counting it. If you can't, then it is a non-count noun. Try it. Here are some sentences using count nouns. I ate 3 delicious cookies. The 2 churches were all on the same street. Here are some sentences using non-count. So the homework was difficult to do. The sunshine was warm on my face. The next class will be another easy one for you because you already know about compound nouns. Yes, this class of nouns is compound nouns. So compound nouns class में easily आप जान लेंगे अगली क्लास में। तो compound nouns are the nouns made up of 2 or more words. Some are just words combined together to make a new word, while others are 2 words joined by a hyphen, dash, or 2 words combined together to make a new words without being enjoyed. So, let us look at some examples of compound nouns. The 2 words enjoyed is equal to house or islet. 2 words joined by a hyphen is paper clip, baby sitter. Or 2 words not joined: fish tank, swimming pool. Here are some sentences using compound nouns. The homework was difficult to do. The sunshine was warm on my face. My time out seemed so long. The conch potato was too lazy to get up and answer the door. Note: have you seen the first sentence before? That's right. Right. Haven't learned before. Have you ever heard of a grind? Not. Don't worry. It isn't as hard as it sounds. Okay. Grind nouns. Grind nouns are common nouns formed from a verb ending in ing. Let us look at some examples of grind nouns: swimming, thinking, dancing. Here are some sentences using grind nouns. Running is something that we enjoy doing. Laughing with my friends is so much fun. We went to white water rafting. The last class that we are going to learn about the collective nouns. Thank you guys. Please like this video. I want 100 likes in this video. Thank you guys. See you in the next video.